So, good morning everyone. I'm Dr. Ritika Singh. I'm senior resident in the Department of Psychiatry. So, the topic for today is developmental psychology in adolescence and its theory. So, last time in last lecture we saw what exactly is developmental psychology, why is it necessary to understand how the human being develop, what are the key characteristic changes which occurs during the course of life in human being. Today, after covering the child part last time, we'll be moving forward towards the another stage of human life, that is adolescence. So we'll be covering the topic under the following headings: introduction, development in adolescence, various type of development that are seen in adolescence, psychological challenges that we face in adolescence, then theories of adolescence. Very important, the role of parenting and mentoring, because this is an age where the role of mentoring comes into play. What are the role of parents to have a healthy adolescent life? And what are the mental health crises and what are the mental health interventions we can learn by seeing the developmental psychology of adolescence. So let us start with introduction. So adolescent is something जो कि transition phase है between adulthood and childhood. So an adolescent is someone who is not yet fully mature, but he has developed some reasoning and understanding of its own. The seek for independence comes into play. You're still fully not independent, but still you are trying to find your own ways. This is the, आप सभी लोग adolescent phase में रहे हैं, कुछ लोग होंगे. This is the phase where the change in the life starts. Okay. WHO defines adolescence as ages between 10 to 19, but this age group can vary in some cultures, some other contexts. Okay, some places it might be 13 to 19, some places it might be 12 to 18. So this is something which varies. Globally, there are approximately 1.3 billion adolescents, which approximately accounts for 16% of world's population. So if you see, this is the age group जो आगे जाके adult बनने वाली है, जो आगे जाके manpower बनने वाला है किसी भी country का. This age group is going to go into forces, is going to become different areas of life में different cultural, different occupational growth के लिए responsible होने वाला है. In India also, about 1/5 of the population is of that age group. So adolescence can later be divided into three phases: early adolescence, middle adolescence, and late adolescence. So what are the characteristics of adolescence? What changes do you see in adolescence? First of all, there is rapid physical growth and there are certain hormonal changes. Emotionally also, if you all have any younger sibling in your house of this age group which is described here, you will see कि उनके mood swings बहुत ज्यादा होते हैं. उनको उनकी बात नहीं मानते तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या फिर उनको लगता है कि अभी मैं बच्चा तो नहीं रहा हूँ. दिस इज सर्टेन थिंग, एक फ्रेज है जो बोलते हैं इस एज में. Social and cognitive maturation, increased independence and self-awareness. So intense and variable emotional state, high need for for support and acceptance, strong natural preoccupation with appearances. अभी they'll try to groom their self also better. अभी मम्मी पापा का लिए हुए कपड़े नहीं, अपनी पसंद के लिए हुए कपड़े पहनना पसंद करते हैं. Transition, it is an age for transition from childhood to adulthood. So this is something a journal just about what exactly adolescence is. So why do we need to study the adolescent psychology? Because it helps in understanding identity formation. There is a phase in this particular part of life where the identity crisis about what am I, who am I comes into play. So if we understand this phase properly, the formation of identity, understanding oneself become easy in later stages of life. It also provides insight for guiding adolescents through various challenges, whether it is in the field of academic, any extracurricular activity, or their emotional health. If you understand the developmental psychology of the adolescent properly, as a mentor, you can guide them how to go ahead in their life. Next is, what are the development in adolescence? So as I told you, it is the age of change, growth, and development. Physical development, cognitive development, emotional development, social development, and important educational and vocational development comes into the play. So what do you see in physical development? Hormonal changes, sudden growth spurt you will see. Okay, it is the age of stress and storm. There are certain
फ्लक्चुएशन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स जिसकी वजह से रैपिड चेंजेस आएंगे बॉडी में, ग्रोथ आएगी बॉडी में, चेंज ऑफ वॉइस, growth of hairs in pubic areas, okay, development in other areas of life as well. So if you see in female, puberty is initiated by raise in estrogen, which is the primary female sex hormone, whereas in male it is testosterone. So the hormonal shift फीमेल में आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट दिखेगा, ठीक है, एंड मेंस्ट्रुएशन चेंजेस आएंगे, whereas in मेल आपका बियर्ड आना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आना, ठीक है, and mood swings are seen equally in both. Then is your cognitive development. Here अभी independence थोड़ा cognitive development की तरफ आ जाता है कि problem solving, making reasons, logic अपने आप से करने लगता है बच्चा. पहले तक हर चीज पेरेंट्स से पूछते थे या टीचर से पूछते थे, अब खुद का रीजन लगा के भी कुछ चीजें समझ में आने लगती है, सॉल्व करने लगते हैं, ठीक है. मॉरल रीजनिंग रिगार्डिंग व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग आल्सो कम्स इनटू प्ले, ओके, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या चीज लॉ अबाइडिंग है, क्या चीज मॉरली सही है, क्या चीज मॉरली गलत है, इसका एक आइडिया अभी लगने लगता है एडोलेसेंस फेज में. इफ यू ऑल कैन रिकॉल योर टाइम, तो आपको भी याद होगा कि जब आप थोड़े 13-14 साल के होंगे तो आप लोगों में भी थोड़ा इंडिपेंडेंटली सोचने की हैबिट आ गई होगी तब तक. ऑलराइट, नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल सेंसिटिविटी एंड मूड स्विंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल्फ का कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम, दैट समथिंग कुछ करके खुद को अच्छा लगता है तो हम उस चीज को ज्यादा करेंगे कि यस दिस थिंग इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर मी, लाइक आई नीड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज मुझे उनके साथ घूमना अच्छा लगता है, ठीक है. देन द कंसेप्ट ऑफ पेयर एंड देयर नीड आल्सो कम्स इनटू प्ले. सो आइडेंटिटी क्राइसिस, फीलिंग एक्सट्रीमली सेंसिटिव, हैविंग कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स, हमेशा बचपन में तो जो पेरेंट्स ने कहा वो सही है, अभी नहीं, ये गलत भी हो सकता है, having reasoning to that thought also comes into play. Then social development, social development में so shift from family centric to peer centric relationship. अब दोस्तों की importance life में कि मेरा independent भी एक circle है जो मेरी family के बाहर है. Relationship forming, attraction towards opposite sex, increased influence of social media and technology. तो I think every one of you have a Instagram page or a Facebook page, but अभी जब आप कुछ साल पहले तक देखें तो जब तक आप 13-14 साल के रहे होंगे तब ये इतना नहीं था, but currently this is the age, यहाँ पे अभी 12-13 की एज से ही बच्चे are very much active in the social media group as well, okay. Then educational and vocational development, focus on subject that may shape their future education and career path. तो 10th के बाद की 11th में क्या सब्जेक्ट लेने हैं, मुझे मैथ्स की स्ट्रीम में जाना है, मुझे बायोलॉजी की स्ट्रीम में जाना है, और आई वांट टू परस्यू समथिंग इन व्हाट वी कॉल कॉमर्स और आर्ट्स की स्ट्रीम में जाना है. सो दिस इज समथिंग, यहाँ से रीजनिंग एंड लॉजिक शुरू हो जाता है. देन करियर एक्सप्लॉइटेशन एंड गाइडेंस, लर्निंग अबाउट अगर एक स्ट्रीम में कितने करियर फील्ड्स हो सकते हैं, exploring various career jobs through part-time jobs, internship, vocational training with guidance from counselors and family. All right. Then you have influence of socio-economic and social factors. क्या होता है, अगर family dynamics अच्छी नहीं होगी इस particular time period में नहीं मिली तो जो proper emotional और cognitive development है that will be affected. Okay. आप कैसे लोगों के साथ ऊपर अच्छे से उठ बैठ रहे हो, if your peer pressure is something who are involved in say anti-social activities, who are involved in consumption of drugs and everything, तो आप adolescent जो चाहे वो है वो भी उसी फेज की तरफ बढ़ जाएगा. so that is why it is called a very critical age, because यहाँ पे दोस्त चुनना भी important बन जाता है, because मेच्योरिटी अभी एडल्ट लेवल की नहीं आई है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी, एंड दिस इज अ करियर फॉर्मिंग स्टेज. सो कभी आप लोगों को पेरेंट्स बोलते भी होंगे कि कैसे लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, थोड़ा ध्यान रखते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो बिट स्केयर्ड कि यू माइट नॉट गेट आउट ऑफ द वे फॉर द सेम. Family expectation, peer influences, and socio-economic status play a significant role in shaping educational and vocational decisions, affecting access to opportunities and career aspiration. Yes, of course, कि socio-economic status अगर नहीं उतना लेवल का है कि किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है बिकॉज फीस नहीं पे कर पा रहे हो, तो that is also that thing can also affect the growth of individual. So after getting a small gist about, थोड़ा बहुत समझ में आया adolescence में क्या क्या होता है, what is adolescence, क्या challenges face करते हैं. So now let us move to psychological challenges adolescent life में क्या क्या होते हैं.
सबसे पहले आई टोल्ड यू कि आइडेंटिटी क्राइसिस, कि नाउ यू आर नॉट अ चाइल्ड, यू आर नॉट एन एडल्ट, बट यू आर समवेयर इन बिटवीन, यू डोंट नो in which phase you are going to go. The questions about who am I, what am I doing in this world, what are the values which I should follow, what is right, what is wrong, and what the place I hold in this world. Because currently you are not that established, whether you are talking financially, whether you are talking academically or professionally. This is the age of formation, not establishment currently, but yes. So these questions are going to come into the person's mind. And if this stage is resolved properly with the help of parental and counselors, then the foundation for successful career is laid. Next is academic and career pressure, कि you have to balance everything, कि पढ़ाई भी करनी है, extra curricular activities में भी participate करना है, दोस्तों के साथ भी थोड़ा time spend करना है, आगे का career क्या होगा उसके लिए सोचना है, कि अगर मेरे को इस कॉलेज में जाना है, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे मैनेजेस होंगे, तो these are the things which comes into play. Okay. अभी इंडिया में तो नहीं, बाहर की कंट्रीज में स्कॉलरशिप और इन सब का, इंडिया में भी कुछ जगह आप लोगों के वहां पे भी, हमारे कॉलेज में भी होगा, बट वहां पे स्कॉलरशिप्स और आपके ग्रेड स्कूल में कैसे, उससे आपको कैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा. दे स्टार्ट वर्किंग पार्ट टाइम विद इन द हाई स्कूल पार्ट ओनली ऑफ देयर सेल्फ. ठीक है. Then of course peer pressure and risk taking. So substance abuse is something which should be very much thought about, because this is the age जब एक ट्राई करने की एज होती है, कि हमको ट्राई करके तो देखना है, हम सिर्फ ट्राई करेंगे, तो वो ट्रायल कब हैबिट में बन जाता है, बदल जाता है, यू डोंट रियलाइज. ठीक है, सब लोग स्मोक कर रहे हैं, सब कूल दिख रहा है, मुझे भी कूल दिखना है. ऑलराइट. देन रिस्की बिहेवियर, बहुत तेज बाइक चलानी बिकॉज सब दोस्त चला रहे हैं. फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मैं, जैसे आप स्पेशली सोशल मीडिया की जो ये लाइफ है, उसमें कहीं मुझे कुछ छूट तो नहीं रहा है, मेरा पेज उसके पेज से कम फॉलो क्यों हो रहा है, व्हाट एम आई मिसिंग इन लाइफ. ठीक है, लोग मेरे को कम क्यों व्यू कर रहे हैं, अच्छा ही हैज और शी हैज मेड सर्टेन वीडियोस एंड आई एम लैकिंग, एवरीवन वही रील बना रहा है, मैं नहीं बना रहा हूँ, और बार बार चेक करते रहना कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा है. एंड ऑल्सो इन डेलिक्वेंट बिहेवियर, दैट इज कुछ लॉ के अगेंस्ट जाना बिहेवियर. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्टिंग बिहेवियर, ये सब चीजें भी इस एज ग्रुप में कॉमन होती है, तो ध्यान रखना होता है. एंड ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, बॉडी इमेज एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स लाइक एनोरेक्सिया, बुलिमिया, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ये सब चीजें बिकॉज ऑफ चेंजिंग लाइफस्टाइल, मोर एक्सेसिबिलिटी, मोर कंसर्न, ये सब इंक्रीज हो रहा है इन यंग एडोलेसेंस, इन चाइल्डहुड से, मतलब लेट चाइल्डहुड से एडोलेसेंट फेज में ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ के आ रही हैं. So these are the certain psychological challenges which an adolescent can face in his or her life. So after covering that portion, we'll move on to what are the different theories of adolescent development. Certain theories are which you have seen last time also. Freud's psychosexual theory we saw last time. Erickson's psychosocial theory. Piaget's cognitive development. Today we'll see, and Vygotsky's sociocultural theory also we have seen. We'll see the continuation part of the first three theory, and Kohlberg's moral development, which is something new, and Marcia's identity status theory is something new. All right. So if you all remember Freud's psychosexual theory, it is divided into different age group को अलग-अलग stages में divide किया था. So जो infant वाला stage था, उसमें child was more occupied with his mouth, कि सब चीज मुंह में डालता था. Then there was anal training stage. Then there was phallic stage when genital curiosity comes into play. Then it was latent stage जहाँ पे sexual feelings are repressed but more engagement in extra sports, studies, इन सब चीजों में ध्यान देता है. Then comes genital stage, which is puberty to adulthood. ठीक है, maturing sexual interest comes. So the more focus is genital mature sexual relationship. Develop and key activities are developing healthy adult relationship, and adolescence learns to learns achieving balance between various areas of life, whether it is work, whether it is love, whether it is family. And if this stage is not dealt properly, certain conflicts can be seen in adult life, like difficulty in intimacy or relationship. Okay. Next, if you remember, हमने एरिक्सन की 8 stages होती है आपको बताया था. तो first 4 we have already covered in child developmental psychology. So today we'll see the 5th stage, which is important for adolescent phase.
नेक्स्ट 6th 7th वाली और 8th वाली जब एडल्ट और जीरियाट्रिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इनको. So 5th stage is identity versus role confusion. So the focus on this stage is about exploring who am I, what is my personal identity, what values and belief system should I follow, and what is the ultimate goal which of my life is. Virtue is the child learn the adolescent love fidelity. Fidelity is something कि आगे वाले relationship में आप कितना honest रहते हो, आप just not relationship, अपने work के लिए कितना honest रहते हो, आप किसी भी चीज के लिए कितने committed रहते हो. Ability to commit to one's identity, value and relationship with sincerity and loyalty. If there is maladaptation, then there is going to be identity crisis and role confusion. And in a later stage of life, there would be difficulty forming and maintaining relationship. Okay, this stage is clear. Somehow similar to genital stage of Erikson, Freud's, right? Next is, if you all remember, we have seen Piaget's cognitive development theory. So sensory motor, pre-operational, concrete operation and former operation. सेंसरी मोटर में जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया था, ठीक है. प्री ऑपरेशनल में आपका थोड़ा सा एक्शन करके कि प्ले गेम और ये सब चीजें आई थी. कंक्रीट में मोस्टली स्कूल गोइंग चीजों से कि आपका थोड़ा सा जो थिंकिंग है कंक्रीट थिंकिंग होगी. Then former operation जहाँ पे logistics, scientific thinking comes into play. So formal operation आपका adolescent age group और से adulthood तक चलती है. Adolescents develop the ability to think about concepts and ideas that are not directly observable, like morality, justice, hypothesis reduction, reasoning, scientific thinking जहाँ पे आ गई. अगर ये conversible चीज हो सकती है, ग्लास आधा खाली है तो आधा भरा भी हो सकता है, ये ऐसी जो सोचेस आती है. They can reflect on their actions and evaluate their decision making. Okay, please be quiet. Next is Kohlberg's theory of moral development. So this theory is dependent on ethical and decision making ability. So in this theory, it is divided into 3 levels, and each level is divided into 2 stages. Although the theory ka implementation comes into play from childhood as well, but मोर इम्पोर्टेंट से जो सेकंड पार्ट है जो यूज होता है वो एडोलेसेंस में होता है. तो अगर आप देखें एक बच्चे को, छोटे बच्चे को, तो फर्स्ट स्टेज है प्री कन्वेंशनल लेवल है, उसमें स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट. सो चाइल्ड विल ओबे एवरीथिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट. ठीक है, मैं क्लास में हल्ला नहीं करूंगा, नहीं तो मुझे क्लास से बाहर भेज दिया जाएगा. ठीक है, सो द थिंग्स विच आर राइट व्हाट आर दोस जिसको करके मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज. यहाँ पे morality is guided by self interest and reciprocal benefit. That means मैं आपको अपनी नोटबुक दूंगा क्योंकि आप मुझे अपनी पेन दोगे लिखने के लिए. सो यहाँ पे सेल्फ एक्सचेंज बेनिफिट है. मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो उसके एक्सचेंज में मुझे और अच्छा काम करने को मिल रहा है. सेकंड इज योर कन्वेंशनल, जो कि टिपिकली एडोलेसेंट लेवल में देखने को मिलती है. सो स्टेज 3 इज गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. So there the actions are judged by intention and making relationships. यानी कि good boy good girl वाला. ठीक है, कि I will act kind because this is something good. I'll sit silently in class. I'll do my homework because this will make me look good. All right. Next stage 4 है जहाँ से थोड़ी सी reasoning understanding और जाती है, वो है maintaining social order, following laws and following whatever is legally right. I will not speed up my bike or a car because इससे मुझे ये लीगली गलत हो जाएगा. एक स्पीड लिमिट होती है, हमें इतने में ही गाड़ी चलानी है. ठीक है, लॉज एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर फॉर ग्रेटर गुड. नेक्स्ट इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो कि थोड़ी मेच्योरिटी पे आती है. स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स. इसमें देखता है कि until unless आपका कोई laws can be flexible if social and contracts that should promote the greater good is maintained. That means कि ठीक है, अगर भाई मेरे घर में किसी का एक्सीडेंट हुआ तो मैं तेज गाड़ी चला के जा सकता हूँ. ठीक है, आई विल नॉट माइंड स्पीडिंग इफ आई नीडेड समवेयर. देन सिक्स्थ इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेंड. दिस इज समथिंग जो कि वेरी एडवांस्ड है. एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल लाइक डिग्निटी, ह्यूमन राइट, ह्यूमन बीइंग्स, उसकी लाइफ सबसे ऊपर है, लॉ से भी ऊपर है, गवर्नमेंट से भी ऊपर है, ये बोलता है ये चीज. ठीक है, सो दिस इज आपकी मोरल डेवलपमेंट. तो यहाँ पे मोरालिटी को, कि मोरालिटी हर एज ग्रुप में चेंज होते रहती है.
कि बच्चों के लिए मोरली चीजें क्या सही है क्या गलत है इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज दैट फॉर एडल्ट एंड व्हाट इज दैट फॉर एडोलेसेंस. ऑलराइट. Then Vygotsky's we have seen last time कि सोशियो कल्चरल लैंग्वेज ये सब कंबाइन करके एक इंसान की डेवलपमेंट में हेल्प करती है. We also saw the concept of zone of proximal development और एक बच्चा एक मैथ का प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सकता है लेकिन उसकी टीचर कोई हेल्प करेगा, मोर नॉलेजेबल अदर उसको हेल्प करेगा तो ही कैन क्रैक द मैथ ओलंपियाड. ठीक है. Next is your Marshall's identity status theory. Okay. So what Marshall's identity status theory says, it is divided into 4 identity status which are based on 2 dimensions. One is how much you explore and how much you are committed towards your goals. Exploration is actively questioning and examining values, beliefs and goals, whereas commitment is making decision and committing to the set of choices in various areas of life. So first is your identity diffusion. यहाँ पे ना exploration है ना commitment है. Okay, no exploration, no commitment. So child or adolescent is confused. There is lack of future direction and goals like and motivation. Okay, individual is indifferent and apathetic about identity. Next is identity foreclosure. Commitment है लेकिन exploration नहीं है. Parents ने बोला कि तुमको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना है, मुझे नहीं पता, मुझे और कोई चीज करनी नहीं है. ठीक है. कमिट तो यू हैव बट यू हैव नॉट सीन कि आपको और क्या, आप अपने आप से किसी चीज में अच्छे हो, कोई चीज आपको अच्छी लगती है, तो ये सब चीजें नहीं पता है. ठीक है. The individual adopts beliefs and roles handed down by parents or society without questioning them. It can lead to rigidity and dissatisfaction in later life. Then is identity moratorium. Okay, एक्सप्लोरेशन है लेकिन कमिटमेंट नहीं है. सो ये आपको एडोलेसेंट या अर्ली एडल्ट फेज में लिखेगा कि यू आर सीकिंग वेरियस पार्ट ऑफ लाइफ, यू आर सीकिंग वेरियस पार्ट ऑफ जॉब्स आल्सो, बट यू आर नॉट कमिटेड कि मुझे यही करना है. ठीक है. द इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट्स विद डिफरेंट रोल्स, बिलीव्स और कैरियर बट हैज नॉट सेटल्ड ऑन अ डिसीजन येट. Critical age for identity development may cause anxiety and uncertainty because आप श्योरिटी नहीं है, अभी कमिटमेंट नहीं है, तो ये अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट एटलीस्ट यू एक्सप्लोरिंग आउट. लास्ट इज योर आइडेंटिटी अचीवमेंट. एक्सप्लोरेशन फॉलोड बाय कमिटमेंट. आपने एक्सप्लोर किया, फिर ये सब चूज करके आपने सोचा कि हाँ ठीक है, मुझे मेरे लिए सबसे सही है कि मैं एक स्कूल में प्रोफेसर बन जाता हूँ और एक कॉलेज में प्रोफेसर बन जाता हूँ. आपने सब सारे फील्ड वो करे और फिर आपने उस जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको वो जॉब अच्छी भी लगी और आप अच्छा मेंटेन कर रहे हो, तो एक्सप्लोरेशन भी आ गया. नाउ यू आर कमिटेड, यू आर डूइंग योर गुड इन दैट वर्क. ओके. has resolved identity crisis and made informed choice about their values and roles, leads to a stable sense of self and confidence. So if you see, identity achievement में आपका exploration भी high है, commitment भी high है. Identity moratorium में commitment low है लेकिन exploration high है, whereas identity foreclosure में आपका commitment बहुत है लेकिन कुछ explore नहीं किया है, और identity diffusion में ना commitment है ना exploration. Okay. So these are certain theories of adolescence development. So after learning about all the theories, if you are aware of कि ये theories आपकी psychology में कितनी help करती है, तो a parent and a mentor can resolve many of the problems which are faced by adolescents. So what are the roles of parenting and mentoring? एक तो कि parents they provide emotional, social and financial stability to the child, okay, to the adolescent. Adolescent is yet not a mature adult. Adolescent is not someone who is fully independent. So all these एक तो social security होती है, एक emotional security होती है, वो family से, parents से मिलती है. ठीक है. What do you mean by effective parenting? बहुत टाइप की पेरेंटिंग होती है. कुछ पेरेंट्स हमेशा पनिश करना पसंद करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्यूनिटिव पेरेंटिंग, विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प. ठीक है. एक होती है अथॉरिटेटिंग, जिसमें हमेशा अथॉरिटी चलाता है, जो मैंने कहा है वही सही है, वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है. तो पेरेंटिंग इज समथिंग जहां पे आपकी क्लियर बाउंड्रीज हो. ठीक है. और लेकिन इंडिपेंडेंस भी मिले बच्चे को खुद से एक्सप्लोर करने के लिए. ठीक है. आप ध्यान रखो लेकिन टोको नहीं बच्चों को. ठीक है. This is what is effective parenting. A healthy parent-adolescent relationship foster open communication. Parenting should be such that कि बच्चे को करके दिन कोई बाहर प्रॉब्लम हो रही है, आउटसाइड वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो रही है, वो आपसे राय लेने के लिए आ सके, लेकिन ऐसा ना हो कि आपसे डरे और ऐसा भी ना हो कि आपको कुछ समझे भी ना. ठीक है. सो आपकी राय आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो, बट दिस थिंग इज गोइंग टू कम अगर आप बचपन से बच्चे को किस डायरेक्शन में डाल रहे हो. ऑलराइट.
Parents serve as a primary role model, shaping their child's value, behavior, and attitude. Again, career counseling, provide helping them explore the different areas of life is जहाँ पे mentor का या teacher का role आ जाता है. In guiding adolescents through educational and career decisions, offering advice, resources, and opportunities for exploration and self-discovery. Okay. Then adolescent psychology आपको with various mental health interventions के लिए भी help करती है. If you know कि psychology, normal psychology क्या है, you can see the pattern जो थोड़ा abnormal हो रहा है adolescence में. So उसके लिए आप क्या various mental health interventions use कर सकते हो. ठीक है. So first of all, understanding normal versus abnormal development. Normal development हर किसी टीनेज बच्चे को देखोगे थोड़े मूड स्विंग्स, थोड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस, हर किसी को अपने आप को एक्सप्लोर करता है. बट जहाँ पे बहुत ज्यादा कंडक्ट प्रॉब्लम, बहुत एंटी सोशल प्रॉब्लम आ गए, बहुत डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा एंशियस हो रहा है, स्कूल गोइंग एकदम बंद है, या कॉलेज के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, सब्सटेंस यूज में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो गया है, तो यहाँ पे पैथोलॉजिकल इश्यूज है. तो यहाँ पे हेल्प लगेगी किसी आपके प्रोफेशनल इंसान की. Then you have to identify risk factor and protective factor. Risk factors क्या है कि अगर फैमिली कन्फ्लिक्ट ज्यादा है, फैमिली में लड़ाई हो जा रही है, अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, बुलिंग है, सब्सटेंस यूज का हिस्ट्री है, कोई पास्ट हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड ट्रामा है, सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो गई है, एकेडमिक प्रेशर या तो बिल्कुल ही नहीं ले रहा है, फिर इतना ले रहा है कि जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जा रहा है एडोलेसेंट. तो दीज आर गोइंग टू बी रिस्क फैक्टर्स. Then you also have certain protective factors like अगर strong family support है, value है, एक healthy coping mechanism है, अच्छी access है education, extra curricular activities को, और अपने पे emotional regulation है. So these are the protective factor कि outcome एक adolescent से adulthood life में अच्छा होगा. So CBT is cognitive behavioral therapy. So this is one form of mental health intervention अगर बच्चों के thought process में कोई problem आ रही है. ठीक है. So ये आपका it help them recognize and modify negative thought pattern. So what CBT tells कि जो भी हमारे actions होते हैं they are guided by our thoughts. ठीक है. एक कोई आपका कुछ feeling influences behavior, behavior reinforces thoughts and thought influences feeling. ठीक है. तो ये एक cycle है. तो आपके हाथों में एक्सटर्नल चीजें क्या होने वाली है आपके हाथ में नहीं है. आप अपना एक्शन कंट्रोल कर सकते हो बाय मॉडिफाइंग योर ओन थॉट प्रोसेस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझसे बात नहीं करी है. ठीक है. आपका दोस्त का बात नहीं करना आपको बहुत बुरा लगा, और आपने रिवर्स में क्या किया, अपने घर में जाके लड़ाई कर ली. ठीक है. सो यहाँ पे आपको वो सोचना, अपना थॉट जो आपको बुरा लगा है उस पर एक्शन करना है कि यहाँ पे एक डिफरेंट एक्शन डायरेक्शन भी तो हो सकती है. आपके दोस्त ने शायद इसलिए बात नहीं करी हो बिकॉज वो कहीं बहुत बिजी हो, क्या पता उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, क्या पता वो आपके पास बात करने आया था और आप उसको मिले नहीं. देयर कैन बी मैनी रीजंस. अगर आप यहाँ पे एनालिसिस शुरू करोगे तो जो आपका एक्शन है घर में जाकर लड़ाई करना वो रुक जाएगा. गेटिंग इट? नेक्स्ट इज इमोशनल एंड सोशल लर्निंग प्रोग्राम. So these interventions focus on emotional regulation, peer relationship, conflict resolution, promoting positive and social development, social awareness, okay, self management, अपने emotions को कैसे manage करना है, being aware about self के values, others के values, and responsible decision making. Next is family based intervention या family therapies. So since adolescents mental health is influenced by paternal relationship, family therapy and parenting programs are essential component of treatment. So what happens कि आपका therapist हर एक family member से बात करेगा, उन सबकी value system को recognize करेगा, and will ask them, will give you certain tasks कि आप ये सब try करें family में, ये सब नहीं करें, and after that you'll have to follow कि जो therapist ने बोला है. Then community, so school and community program to reach towards the wider audience, to implement more awareness regarding कि high risk क्या है, low risk क्या है, क्या problem हो सकती है और उसे face कैसे किया जा सकता है. Developmental psychology guides the design of school counseling services, peer mentorship program and mental health awareness campaign, ensuring that interventions are developmentally appropriate. Then addressing identity and self-concept issues. So it will help encourage self-exploration through career counseling, building self-esteem through positive reinforcement and skill development, and help adolescents navigate gender identity, cultural identity, and self-concept challenges. So this is what we have learned in today's lecture. First of all, to conclude कि adolescent is something very crucial age जहाँ पे आपका
ग्रोथ डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव चेंजेस आ रहे हैं, एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस है, identity crisis is something which an adolescent faces, and reasoning and social behaviors are changed. Factors like parenting, peer influence, education, culture, socio-economic condition all helps in shaping the life of and mental and emotional well-being of an adolescent. A certain intervention like CBT, emotional and social learning and mentorship programs, if you know the psychology of a developing adolescent, you can implement them better. The experience, social support and coping strategies developed in adolescence, they help you have a good and successful life in adulthood and elderly ages. Okay, these are the references. So I'll conclude today. So any questions?